So good afternoon to all of you. Sorry for starting little bit late. I think you all would have seen the traffic jam which is there in front of the office. When I was coming in the morning, and I'm talking about around 11 to the office I was going, that jam was still there. I was stuck in that jam for around 50 minutes in total. And in fact, it was me who first called the traffic helpline number बिकॉज इतनी देर से जाम लगा हुआ था देर वॉज नो बडी तो मैंने कॉल किया ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर पे फिर वो उन्होंने ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला आया एंड आई थॉट कि उसके बाद हो गया होगा अभी तक ख़त्म बट इट इज़ स्टिल देयर आई थिंक द रेड लाइट वहाँ पे ख़राब हो गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट सो अभी व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस सेम प्रॉब्लम तो फिर आई हैड टू अल्टीमेटली मैंने देखा कि अब ज़्यादा लेट हो रहा है तो आई हैड टू वॉक थ्रू वहाँ ऑफिस से यहाँ तक ओके सो लेट अस स्टार्ट एंड today the first thing we are going to do is we will be discussing about geography, the nature of geography, and then we'll also discuss bit about physical geography. So now as soon as I see here geography, number of things or number of questions rather say they start to bombard my mind. But one of the most basic question that comes to my mind is why we are studying geography. Anyone would like to contribute? Hmm. So he tries, sit down please. Very good answer. So he is saying that geography helps you understand your environment. That is basically what you are trying to say. So to we can simply say to understand our environment. Hmm. Hmm. So to know about geographical phenomena, various type of geographical phenomena are there. और भी है कोई? So to understand the temporal and spatial aspect of the phenomena. Hmm. So you are again saying the same thing to understand our environment. Hmm. So geography can be useful from economic development perspective. That is what you mean? Hmm. Description of the earth it is. Human environment to understand the human and environment relationship. Okay. Okay. So international relations, geopolitics. यहाँ पे भी है कोई?
to have knowledge about evolution and existing of the things around us, to know about Earth system, and you can understand we can keep on going. It would not stop because geography we will see that it is almost, it encompasses everything. Okay. But believe me, this was not the answer I wanted to hear from you. And it is unfortunate that your goals are not very clear. Your ideas are not very clear. It is unfortunate. Because if you would have asked me the same question, I would have said to clear civil services examination. Okay? This was the answer which I was expecting from you. If you are studying geography for the purposes you told me, then you shouldn't be sitting here. You should have joined some university. You should be pursuing some research, a course regarding geography. Okay? You shouldn't be here. If you are here, it has to be very, very clear why we are studying geography is to clear civil services examination. ठीक है? This should get engraved in your mind. Everywhere when you are getting diverted from your goal, this basic idea should come to your mind. Because what actually is happening, we start studying and there will be many places where you will actually not understand. होता है ना कि हर चीज समझना मुश्किल नहीं, अल्टीमेटली मुश्किल होता है. Because to understand everything, we should have access to all the information. Okay. But it is not necessary that we will have access to all the information. So, होगा कई जगह पर समझ में नहीं आएगा. Many times it happens that probably it would be from my side that I am not so much clear in explaining those concepts to you. हो सकता है. I am also a human being. Many times my communication skills might not be so much good. So these things would happen. Or many times, in fact, so many times, in fact, तुम लोग सो रहे होगे क्लास में तो समझ में नहीं आएगा. So in those circumstances, what happens? What is the normal behavior of a student? What he or she begins to do is that they will try to again adopt that perfectionist approach. और समझ में आना ही है भाई, समझ में आना ही है, कुछ भी करेंगे, ये बुक पढ़ लेंगे, वो बुक पढ़ लेंगे, बट समझ में आना ही चाहिए. एंड आई रियली बिलीव ये जो डाइकोटॉमी बनाया ना, दिस डाइकोटॉमी इज एक्चुअली रॉन्ग. तुमने सुना होगा लोगों को कहते हुए दिस डिफरेंस बिटवीन किसी चीज को समझना और उसको रटना. Yes or no? Most of us have been taught the same thing. I really don't believe in this dichotomy. I think that it is more like a stepped phenomena. So in these stepped steps, what is taking place at first level is it comes the case of memorization. And ultimately at the second level, there is the phenomena of understanding. ठीक है? And I'm not saying कि ये बिल्कुल hard fast rule है. Some understanding can come even at the first level. But complete understanding cannot be till you also have memorized all the information. I'll give you one example. Since you all know, you would have seen the syllabus or the schedule. We will be starting with human geography. First, we'll be starting with the population geography. Then will come the most difficult part,
that is perspectives in human geography, which is a very philosophical, very boring topic. So when I was a student, मेरे लिए बड़ा boring था वो, जैसे सबके लिए होता है. And so much of philosophy, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है. And like most of the students of today, I also in my student days used to face this problem with perspectives. कुछ समझ में नहीं आता था कि ये कर क्या रहा है, what they are saying, why this topic is even there. And there was, when we'll study, we'll see that there were two very important scholars before the modern period. That is why we call it as the pre-modern period. And the name of these scholars was Humboldt and Ritter. Alexander von Humboldt and Ritter. तुम लोगों ने शायद Humboldt का नाम सुना होगा. Humboldt current. It is a cold current along the coast of Peru. ठीक है. So Humboldt and Ritter. अब दोनों में बुक्स में पढ़ोगे तो there are two statements written. With Humboldt it is written that his objective was unity of cosmos. That was his final objective, ultimate destination. For Ritter, the books write that his ultimate objective was to understand the unity in diversity. ठीक है, अच्छा है, सुनने में अच्छे लगते हैं words. But these words never made sense to me as a student. I tried to find the meaning, what exactly they mean by these. Unity of cosmos, unity in diversity. But समझ में नहीं आया. I used to go to one library, JNU की library I had access to. तो वहाँ पर भी जाता था. I searched to so many books, but कुछ मिला ही नहीं उसके बारे में. Ultimately, when I became a teacher, what happened? ये सारे topics मुझे बार बार पढ़ाने पड़े. ठीक है. So you can understand at least 4-5 times in a year, I was repeating these topics. And बार बार वो repeat करता था. Unity of cosmos, unity in diversity. ठीक है. और ultimately क्या हुआ? Not only these, other related topics like other objectives of geographers, like I ultimately understood that geographers wanted to always make a science of geography, to develop geography as a scientific discipline. ठीक है. तो I kept on repeating these things. Ultimately one day it made sense to me. And what was that sense? They wanted to ultimately, what was their objective? Both of those scholars, their ultimate objective was to develop science of geography, develop some laws which can be applied across the cosmos, across any diversity. Some such kind of universal laws. ठीक है. बट ये मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा. I ultimately got through. I understood. And how I understood? Because मैंने ये first level clear कर लिया. Because I had to repeat it so many times that वो मेरे दिमाग में engraved हो गया. और जैसे ही वो engraved हो गया, बाकी टॉपिक से उन वर्ड्स का क्या रिलेशन था, those connections, those relations, they began to get established in my mind. And ultimately, I achieved the breakthrough. ठीक है. So, ये junctures तुम्हारी लाइफ में भी आएंगे once you are starting geography. There will be several places where you will be stuck. ठीक है. Those who are attending the classes right now, every day they are facing this problem. Now you have two solutions to that problem. One solution is I press so much and I try to solve the problem then and there only. I try to understand the things which I didn't understand then and there only.
I will search through internet, I will search through some books if I have, or some other sources, or maybe I'll consult someone. ठीक है, ये एक तरीका है. I really believe that in this first solution, the problem is we are getting deflected from our primary goal, which was to clear civil services examination. Because अगर याद है तो yesterday हमने क्या किया था, एक रूल बनाया था, 60-40 का रूल बनाया था. 60% of the time should be devoted to study of new things and 40% of the time should be devoted to revision. If I am doing this research in the first solution, do you really think that you'll get that time, 40% time मिलेगा? नहीं मिलेगा. ठीक है. सो कहीं कहीं पर क्या करना चाहिए, जो सॉल्यूशन 2 है, that is actually a very good solution if you ask me. And if I ask you, in fact, एक क्वेश्चन पूछूं, there are so many things which are required to be or for you to become civil servant. ठीक है. So many quality traits that you require, personality traits in fact. Now tell me, is one of the personality trait, can we say very important, is it patience? चाहिए कि नहीं चाहिए? So much is required. The examination process is very long. ठीक है. So जब हम उस जंक्चर पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम स्टक हो गए, ठीक है, तो कैन वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, कैन वी गिव आवरसेल्व्स टाइम. तुम लोगों ने इसको अपनी लाइफ में भी देखा होगा, मेरे साथ होता था, एंड आई हैव टॉक टू मेनी पीपल एंड दे ऑल्सो हैव दिस, दे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस. एंड व्हाट वाज दैट, कि जब मैं स्कूल डेज में मैथमेटिक्स सॉल्व करता था, तो समटाइम्स ऐसा होता था कि आई वाज स्टक इन सम क्वेश्चन एंड आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट. फिर क्या हुआ, सपोज इफ इट वाज अ नाइट टाइम, उस क्वेश्चन को पढ़ा और सो गया. मॉर्निंग में जब उठा तो अपने आप सॉल्यूशन कहां से आ गया, बट आई अल्टीमेटली सॉल्व दैट विदाउट anyone's help. So how many of you have had this kind of experience? What I did there, I had a little bit of patience. ठीक है. So whenever you are facing this problem, or remember, ये problem everyday basis पे आएगी, everyday basis पर. ठीक है. What I have to do there, I have to move on. I'll just highlight the keywords. Remember, try to memorize the keywords. ठीक है. I'll not push through. कभी कभी जबरदस्ती पुश करने से बेटर है ना, कि टाइम और स्पेस को, let the time and space take the control and they'll give you the solutions. I'll not waste my time because I have to maintain my 60-40 rule. ठीक है. So ultimately, what I'll do, I'll just try to mug up that and wait for future. हो सकता है I will be available in fact in the classes. सपोज वो इतना ही क्रिटिकल है तुम्हारे लिए, हो सकता है इट माइट बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसकी वजह से आगे के रास्ते नहीं खुल रहे. सो देन देर इज ऑलवेज अ चांस यू कैन कम एंड आस्क मी, एंड देर इज ऑल्सो an academic coordinator. He will be taking the last 2 classes of this 6 days, so you'll also get to meet him. He's also there, you can go to him, Pranjal sir, and you can ask him. He's also very good in geography. ठीक है. बट मैं उस टाइम अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रॉमिस टू माई सेल्फ. अभी भी क्या हो रहा है, सो मेनी स्टूडेंट्स, अभी जो क्लासेस हो रही हैं, व्हाट हैपन्स कि दे गेट स्टक. अब वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं. सो ईदर दे आर मडलिंग थ्रू द बुकलेट्स वी हैव गिवन. हम 2 तरह के मटेरियल देते हैं. One is the handouts and some booklets also, like book.
replacement of a book. So either they are muddling through the booklets or they are struggling in some of the books, trying to find out कि उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुमने इस टेंडेंसी पे कर्ब कर लिया, half your problems are solved. UPSC examination is a it requires a very strong psychological part. So यहाँ पर you have to control that tendency and it is not easy. सुनने में आसान सा लग रहा होगा, it is not easy. ठीक है, so I hope we are very clear with this. Yes or no? So और ये जो दोनों चीजें हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों चीजें इसी तरह से हैं, ऑल्दो दे गो हैंड इन हैंड. ठीक है, बट अगर मुझे किसी को पहले रखना है, किसी को बाद में रखना है, तो मेमोराइजेशन कम्स फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कम्स लेटर ऑन, द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और हमने स्कूल में यही तो किया यार. टेल मी, इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, वो टेबल्स रटने पड़ते थे कि नहीं? देन ओनली यू कैन बी गुड इन मैथमेटिक्स, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है. तो कहीं ना कहीं एक स्टेप है जहां पर you'll have to mug up, you'll have to memorize. ठीक है, okay, so that is first thing we should know. No doubt whatever you answered, whatever you said is all correct, that geography has so many dimensions, it has so much of utility. ठीक है, so all those things are correct. Now second question, let us take one more question and try to answer this. Study or description of the earth, okay. Okay, so scientific study of human environment relationship. If anyone wants to contribute online, you can do that. और भी कोई है? I would say this one is better. पहला जो स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ हमने जो बात की, नाउ टेल मी, इस डेफिनेशन में कैन वी कीप बायोलॉजी ऑल्सो? बायोलॉजी भी तो यही काम कर रहा है, फिजिक्स वो भी यही काम कर रहा है, केमिस्ट्री भी यही काम कर रहा है, सभी डिसिप्लिन यही काम कर रहे हैं. जस्ट दे आर स्टडिंग अर्थ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव. ठीक है ना? सो this one seems to be a better idea, that we are here concerned about the study of human environment relationship. ठीक है, so in geography, what is essentially the core of geography? In geography we are concerned about the study of human and environment relationship. We study earth. First was not wrong, it was just incomplete. So it is what? It is study or description of the earth as, इसको अगर मैं complete करूं तो I could have said as abode of humans or home of the humans. And what it essentially means, we are concerned about this phenomena, this relationship in geography, human and environment relationship. ठीक है,
बट टेल मी, क्या मैं कह सकता हूं कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? यस और नो? इकोनॉमिक्स यही कर रहा है, सोशियोलॉजी भी यही कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी यही कर रहा है, जितने भी डिसिप्लिन देखे वो तो यही कर रहे हैं. दे आर कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप. ठीक है, so there must be something more specific जो ज्योग्राफी के लिए कह सकते हैं यूनिक है, which makes geography a unique discipline. Yes, ecology is also doing the same. So क्या यूनिक हो सकता है ज्योग्राफी के लिए? मैपिंग ऑफ द अर्थ. ओके, what do you mean by geographical phenomenon? Yes, Janvi, it is important to take humans always in this geographical studies. Human is, we will later see, humans are at the core of geographical studies. But what this gentleman said, it is absolutely correct. मुझे अगर इस क्वेश्चन को सोचना होता है, यूनिकनेस ऑफ ज्योग्राफी, तो आई थिंक अबाउट समथिंग विच हैज बीन यूनिक, जो बाकी चीजों में नहीं होता. और मैं अपने स्कूल डेज को देखूं तो टेल मी कि एक बुक ऐसी थी जो किसी और के पास नहीं थी, एंड कैन वी से इट वाज एटलस विच वाज यूनिक टू ज्योग्राफी. ठीक है, so if you talk about geography, geography is essentially what? Study of the human environment relationship. Can I say ये भी incomplete है? Human environment relationship as it is distributed on the surface of the earth. ठीक है, as it is distributed on the surface of the earth. So what happens with geography? Geography essentially becomes a very important, in fact, dimension of geography is that geography becomes a spatial science. It becomes a spatial science. ठीक है, in fact, I'll tell you, you can understand that when the modern period began, and in that modern period, first time, in fact, you must have heard about the term Renaissance. सुना है? Renaissance was a period in Europe after the Dark Ages when ultimately the age of discoveries started, and so much of information was accumulated about the world, about the phenomena which are going on in the world. ठीक है, तो उससे पहले क्या होता था? There was no division of subjects. ठीक है, there was one subject, that was knowledge. So whoever had to study, वो knowledge को पढ़ना पड़ता था because it was very limited. But उसके बाद क्या हुआ? Information, there was information bombardment. So much of information was gathered, it became practically impossible for one person to study everything. And from there on, what we started to do, we started to do specialization. Okay? So then there was the beginning of these disciplines. So the one which was studying the earth, physical laws, it became physics. Which was studying the internal composition of matter, it became chemistry. Which was concerned about study of living beings, it essentially became biology, and so on. So there was a very famous scholar, सुना होगा शायद तुम लोगों ने, Immanuel Kant. Kant is so much famous name, and Kant took this task of classifying knowledges into categories. ठीक है, so he started to classify these knowledges into categories or disciplines. But
जब कांत के सामने ज्योग्राफी और हिस्ट्री आए तो कांत बेचारा कंफ्यूज हो गया, इनको कहां क्लासिफाई करें, बिकॉज इसमें तो सब कुछ है. इन ज्योग्राफी यू आर स्टडिंग द फिजिकल फिनोमेना, you are studying the human phenomena which can include economic, politics, social aspects and so many other. So he was very confused. बाकियों को तो उसने क्लासिफाई कर दिया, बट इनको लेकर के बहुत कंफ्यूजन था व्हाट टू डू. एंड बाद में देखेंगे, thus he was of the view that geography and history, in fact history में भी यही होता है, both of these are very unique disciplines. बाद में देखेंगे later, it was referred to as the idea of exceptionalism. ठीक है. So from there arose the idea of exceptionalism. And what is basic idea of exceptionalism? These subjects are very different and thus they shouldn't be organized according to their subject matter, because they don't have a unique subject matter. They are studying subject matter which is also being studied by other disciplines. ठीक है. So ultimately what Kant suggested, he suggested that geography was study of or description of phenomena as it existed in space or as it was distributed in space, while history was essentially what? It was a discipline which was involved in chronologically ordering the phenomena. ठीक है. So that is basically the difference between history and geography, the difference of time and space. So what happens with geography? Geography is ultimately becoming a spatial science. So what is something unique about geography is this, what we said, as it is distributed on the surface of the earth. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. ओके. अब इसका मतलब मेरे लिए क्या है, बिकॉज हमें भूलना नहीं है, कहीं पर भी हमें नहीं भूलना है. दिस इज आवर गोल. सो इसका मतलब मेरे लिए क्या है? From more practical purposes, from exam oriented purpose, tell me. Okay. ठीक है. You didn't understand the question. You have answered, but you are not specific. You people again didn't understand the question. If geography is a spatial science, what is there for me there in UPSC? What I can get from this? Okay, let me answer this. Does it means that if I am writing an answer in geography, particularly geography optional, and if I don't include the spatial aspect of the phenomena, whatever I am writing, can I say it won't be geographical? Yes or no? सीधा मतलब है. और देखें तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है that wherever there is opportunity, if I don't draw a map or some kind of diagram, can I say that मेरे marks कम हो जाएंगे? Yes or no? ठीक है. I have seen many students every day they are submitting their copies, they are getting their answers checked. और यार मतलब एक मैप ढंग का नहीं बना पा रहे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर इन देयर थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट, बट उनसे मैप नहीं बन रहा. और इतना मुश्किल नहीं है. इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट. मैप बनाया जा सकता है. विल टॉक अबाउट दैट इन द क्लासेस.
कि कैसे बना सकते हैं। मेरी अगर मैं बताऊं तो ड्राइंग एबिलिटीज बहुत ही घटिया, एक घटिया होता है और घटिया से भी जो नीचे होता है, इट यूज टू बी लाइक दैट, बट आई स्टिल लर्नड ड्राइंग द मैप्स very quickly, and ultimately that was very helpful. और अगर मैं तुम्हें बताऊं what is my experience with the copies that we see and finally the results that come in UPSC, हमें एक चीज बहुत क्लियर दिखाई पड़ती है कि जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन और मैप पर्टिकुलरली बनाने की एबिलिटी अच्छी होती है, दे ऑलवेज हैज एन एज ओवर द अदर्स। ठीक है, दे ऑलवेज हैव एन एज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि इफ यू आर कमिंग इन टू दिस सब्जेक्ट एंड यू डू नॉट प्रैक्टिस फ्रॉम डे वन drawing of the maps, because ultimately in the examination you'll not get more than 30 seconds to draw the maps. तो अगर ये एबिलिटी डेवलप नहीं की, ठीक है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, because there are people who are doing lots of hard work on this area. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका बहुत आसान है, एक इधर से ट्री बनाया, बन गया साउथ अमेरिका, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए, आई हैव टू प्रैक्टिस दैट। ठीक है, और बाद में सिखाऊंगा कि मैप्स में जैसे हम ओरिजिनल में देखें तो ऐसे वो सब नहीं करना होता, वी कैन नॉट डू दैट। we'll see that the maps we are making, actually they are not maps, they are diagrams. Technically speaking, maps are always to scale. ठीक है, यहां पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, इट इज जस्ट अ डायग्राम टू एक्सप्रेस आवर व्यू, टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज। ठीक है, सो वन थिंग we can learn here, if geography is a spatial science, is that maps and diagrams are the language of geography. They are the language of geography. ठीक है, तो इस पे स्टार्टिंग से ही हमें बहुत क्लियर होना चाहिए और उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? नाउ, सो दैट इज वन थिंग। अब इसमें थोड़ा सा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वी आर सेइंग ह्यूमन एंड स्टडी ऑफ, इट इज ह्यूमन एंड एनवायरमेंट relationship. This is what we are saying geography is. Now tell me, can I say, अगर मुझे इस रिलेशनशिप को समझना है, do I also need to understand environment? Yes or no? वो बेसिक प्री रिक्विजिट होगी उसको समझना। ठीक है, सो कैन आई से कि इसका मतलब है, मैं ज्योग्राफी की अगर बात करूं, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी, कैन आई से वन एस्पेक्ट वुड बी environmental studies? Yes or no? Environmental studies करना पड़ेगा, then only we can establish this relationship human environment. तो सीधी सी बात है, and once we have done this, we will also ultimately then we will able to understand this human environment relationship. ठीक है, तो अगर मैं ज्योग्राफी को के कोर मैटर को देखूं, the subject matter, if I see, can I say this environmental sciences or studies, essentially this is your physical geography? Yes or no? Physical geography है, and this is your human geography. So there is physical geography, there is human geography.
ठीक है, बात समझ में आ गई? तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ज्योग्राफी। अब इससे भी एक चीज हमें सीखनी है। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फ्यू डेज बैक आई वाज टीचिंग मॉनसून। ठीक है, सो मॉनसून इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना एंड even scientists have not understood many of the phenomena which are there in the monsoon. ठीक है, like burst of monsoon. So students, वो क्यूरियोसिटी, ह्यूमन क्यूरियोसिटी तो होती है, तो समझ में नहीं आ रहा है, दे आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस एंड दे वांट टू इवन गो इनटू इवन मोर डीपर कि ये भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो आई ऑलवेज टेल देम इन द क्लास, you have to understand, you have to draw the boundaries. ठीक है, because as soon as you are asking such many questions, you are crossing the boundary. And what is the boundary of geography? This is the boundary of geography. ठीक है, हम environmental studies क्यों कर रहे हैं? What is the ultimate objective? To understand the human environment relationship. ठीक है, सो अब मैं मॉनसून की अगर बात कर रहा हूं, तो मुझे क्यों जानना है यार कि बर्स्ट में कितने और फिनोमेनाज हो सकते हैं? मेरे लिए काम की चीज क्या है? दैट आई नो दैट देयर इज बर्स्ट ऑफ मॉनसून टेकिंग प्लेस. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. बिकॉज जस्ट नोइंग दिस फैक्ट, कैन आई से विल इट हेल्प इन एग्रीकल्चरल प्लानिंग? यस और नो? डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, बहुत सारे तरह की प्लानिंग में हेल्प कर सकता है. दैट इज a question of a geographer. If you are asking why the burst is taking place, that is not a question of a geographer, that is a question of a meteorologist. You have crossed the dimensions. ठीक है, I still remember 2017, one of my students, Pratham Kaushik, he got rank 5. ठीक है, उसके 327 marks थे that year, highest marks. So I asked him कि what were the specific things you had done? So one of the specific things he had done, उसको ये बात समझ में आ गई थी. ठीक है, सो उसने जो किया था, फिजिकल ज्योग्राफी के भी आंसर्स में व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही ऑलवेज ट्राइड टू रीच टू कंक्लूजंस व्हिच वर अप्लाइड कंक्लूजंस. अप्लाइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द कंसेप्ट फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टडिंग इन जियोमॉर्फोलॉजी द टॉपिक ऑफ चैनल मॉर्फोलॉजी. चैनल मॉर्फोलॉजी एक टॉपिक है वेयर वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर चैनल्स. ठीक है, can I say why we are studying? Can we ask ourselves why we are studying channel morphology? Does it helps in, for example, flood control, flood management? ठीक है, so if I am suppose writing an answer on channel morphology, conclusions, can it be more reflecting this phenomena? And will it also, if I am doing this, will it also tell the examiner about my maturity in understanding what geography is? I think so. This is my strong belief. ठीक है ना? सो अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो वो फालतू का जो हम टाइम वेस्ट करते हैं वो वहीं पे कट हो गया, काफी हद तक कट हो गया. You have to understand we are studying human environment relationship. Through this we want to reach this. And that is why we are studying this. But this is not an end. What is the end? This is the end. This is the ultimate objective. ठीक है, अब देखो यहां पर हमने एक बात देख ली, दैट ज्योग्राफी हैज, अगर हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो देयर आर two subject matter. There is physical geography and there is human geography. So can we divide geography into two branches? Physical geography and human geography दो branches में divide कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बहुत फेमस डायग्राम है, देखा होगा तुम लोगों ने, एनसीईआरटी में भी है. Have you seen this diagram?
in NCERT. So there are two branches of geography. कौन कौन से हैं? Physical and human. Physical and human geography. And इसमें भी बहुत सारी branches हैं. Like we know there is geomorphology. There is climatology. There is oceanography. There is biogeography. And there is environmental geography. ठीक है. Similarly, there is various others, like अगर हम syllabus के point of view से जाएं तो we know there is perspectives in human geography, one of the topics which is given in the syllabus. There is economic geography. There is population and settlement geography, and there is regional planning. रीजनल प्लानिंग, ये सभी टॉपिक्स के सिलेबस हैं. ठीक है. और भी मैं लिख सकता था. फॉर एग्जाम्पल आई कुड हैव रिटन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, आई कुड हैव रिटन कल्चरल ज्योग्राफी. वो स्पेसिफिकली मेजर हेडिंग में नहीं है, बट दे आर देयर इन योर सिलेबस. ठीक है. सो अगेन दीज आर द टॉपिक्स विच आर देयर. सो ज्योग्राफी में अभी तक हमने लर्न किया उसकी दो ब्रांचेस हैं, एंड ईच ऑफ दीज हैव देयर ओन सब ब्रांचेस. And can you see, geography is studying very, very diverse phenomena. A very diverse phenomenon. Now, if we look into each of these, they also have their parent discipline or the sister discipline. And if we talk about, for example, there is geology, there is meteorology, there is hydrology, there is biology, and there is ecology. Similarly, perspectives in human geography, there is philosophy, there is economics, there is demography, there is developmental economics. So each of these have their own linkages with the parent discipline or the sister discipline, whatever. ठीक है. तो ये डायग्राम समझ में आया. दिस इज द क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम ये जितनी भी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं. अदर्स आर ऑल्सो स्टडिंग. ठीक है. देन द क्वेश्चन अराइजेस, डोंट यू थिंक इट इज ऑल वेस्ट ऑफ मनी? जब बाकी लोग उसी में स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो हम तो जोग्राफर्स होते हैं. जोग्राफर का आइडिया कैसा होता है? जोग्राफर इज लाइक अ सुपरमैन, लाइक अ हॉक, always seeing the phenomena from a more macro perspective. ठीक है. डिटेल से उसको कोई लेना देना नहीं है. बट ये लोग तो उसके डिटेल्स भी पढ़ रहे हैं, मैक्रो भी पढ़ रहे हैं, डिटेल्स भी पढ़ रहे हैं. So the question arises, again we come back to our previous question, and the question arises, then why we are studying geography? Why geography it is even a डिसिप्लिन? डोंट यू थिंक इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी? इतना सारा फंड्स दे रहे हो रिसर्च के लिए, तो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वही सारी चीजें तो ये लोग भी कर रहे हैं. यस विक्रांत, यू आर करेक्ट, विल कम टू दैट. सो दे आर ऑल डूइंग द सेम थिंग. द क्वेश्चन अराइजेस, then why we are studying geography?
Can you think of? Very good. Here Vikrant has also said the same thing. To compile all these into one, to understand the unity of all the phenomena which are there. Yes, it is the multidisciplinary aspect we have to look into. Anything else? Hmm? That is what they are also talking about. Combining, understanding the linkages. We study geography because geography has two unique features which is not found in those sister disciplines. One, geography is a spatial science जो अभी मैंने बताया, and if you talk about geography is also an integrative science. So it is a spatial science and it is an integrative science. ठीक है? एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पढ़ा है किसी ने? First chapter itself talks about these two. It is a spatial science, it is an integrative science. ठीक है? So this is the two unique features of geography. अब देखो कैसे ये स्पेशल साइंस हम क्यों मान रहे हैं, हाउ इट इज डिफरेंट. ठीक है? सपोज मैं अपने इंस्टीट्यूशन के रेवेन्यूज बढ़ाना चाहता हूं. ठीक है? एंड आई इनवाइट टू पीपल टू हेल्प मी आउट इन दिस एंडेवर. तो मैंने दो लोगों को बुलाया. एक मैंने बुलाया इकोनॉमिस्ट को और दूसरा मैंने बुलाया इकोनॉमिक जोग्राफर को. ठीक है? सो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग इकोनॉमिस्ट विल आस्क मी? कैन आई से he will ask me to show the profit loss accounts books, ledger books दिखाओ. He'll try to find out the optimum solution where I'm spending more and where my revenues are, where revenues can be increased. यही बोलेगा इकोनॉमिस्ट, yes or no? But geographer, economic geographer ऐसा नहीं करेगा. What economic geographer would do? इकोनॉमिक जोग्राफर इस पूरे एरिया में राजेंद्र नगर करोल बाग में ढूंढेगा कि सबसे ऊंची जगह कौन सी है, सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है. ठीक है? आजकल तो वो ड्रोन भी आ गए हैं, तो ही माइट यूज अ ड्रोन, बट ही गो देयर एंड वहां से वो क्या देखना चाह रहा है? द मैप, द स्पेस. And his primary objective will be to find the best space where the revenues can be maximized, and if you talk about the costs can also be simultaneously balanced or reduced according to my needs. ठीक है? So can you understand the difference between the perspective of geography and the difference between the perspective of इकोनॉमिक्स? एंड इट गोज अक्रॉस. ये जितने भी हमने बात किया है सब में ये डिफरेंस है. दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोसेस, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसेस. ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज अ यूनिक साइंस, इट इज अ डिफरेंट साइंस, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी ज्योग्राफी to understand that optimum space. ठीक है? So I hope it is clear what is the meaning of this term spatial science. समझ में आ गया? Now moving on to the second part, integrative science. So integrative science की बात करें, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, during the period of Renaissance there was only one knowledge. ठीक है? And everyone was to study that, all those things, then you ultimately became knowledgeable. But after that what happened? So much information was compiled that it practically became difficult for any one person to study everything. ठीक है? And उसकी वजह से हमने क्या किया?
ब्रांचेस में डिवाइड कर दी नॉलेजेस को, ठीक है। बट ऐसा क्यों किया गया? कैन आई से बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज अ लिमिटेशन to access the information and to solve the problems, process that information. उसकी ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन है, वी हैव लिमिटेड क्रेनियल कैपेसिटी, इसलिए हमने ऐसा किया। यस और नो? इसीलिए हमने ऐसा किया। बट अगर हमने ऐसा किया है, डज इट मीन्स कि रियलिटी भी ऐसी है, अलग अलग? टेल मी, कैन वी से कि रियलिटी इज इंटीग्रेटेड? इट इज इंटीग्रेटिव। Reality is much more complex. All the phenomena together make the reality. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हम आज की डेट में बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वी आर चेंजिंग आवर एनवायरमेंट, ठीक है। बट टेल मी यार, रियली अगर हम हिस्ट्री में जाकर के देखें तो देयर हैज ऑलवेज बी चेंज ऑफ एनवायरमेंट बाय द स्पीशीज। So it is something which is a very natural phenomena. ये होता रहा है, humans भी वही कर रहे हैं। The dominant species, whichever they were, they always do. Even the non-dominant one, they have altered the environment. ठीक है? Same thing. Think about this. Can we say, are there natural places in this world? Yes or no? कौन सी होती है natural places? Antarctica, okay. She says Antarctica. Which are the natural places in the world? Vikrant here says mountains, rivers, plains, plateaus. Middle of the Amazon forest, okay, very good. So by natural, we simply mean something which has not been impacted by the human phenomena. Okay. Now tell me, do you really think, is there any part of the world where human impacts have not reached? Do you really think, directly or indirectly, it has already reached? Okay. For example, don't you think even the remotest parts of the world, remotest parts of the forest would have experienced problems like acid rain? Yes or no? वहां पर भी ह्यूमन इंपैक्ट पहुंच गया। टुडे इन द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कैन वी से कि कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग इज लेफ्ट। बाद में बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे that if you talk about the region of South America, in South America we don't find various types of mammals, ठीक है, in the wild. There is in fact less diversity of the mammals which are present in South America. And number of viewpoints are there. One is the climate change theory. Although we find their fossils, but we don't find many such mammals to be present. But another theory says, beside the climate change theory, it says that it was actually, if we see the fossil records, evidences, it suggests that was also the time when the humans came, reached the continent of South America. So probably humans were responsible for killing of those mammal species, the great hunting which they did. And in very modern times, it has already been seen what happened in North America. ठीक है? So today, बाद में पढ़ेंगे, we'll talk about Marxism, and we'll see. Marx says that there's nothing natural. Even those things which are natural, they have been made natural. They are human created, creation of space. Humans are creating those spaces. एंड टेल मी, अगर हम किसी चीज को नेचुरल लेबल कर देते हैं तो क्या उससे इकोनॉमिक फायदा मिलता है?
Yes or no? Are people going for tourism? Are we earning revenue because of that? Okay. So tell me, don't you think that all these phenomena, they are so much complex, and if they are so much they are not isolated. So can we say that there should be one discipline which should try to understand the reality as it is? क्योंकि ये सब तो सब अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं. कभी टीवी डिबेट देखो about the problems which exist in the country, you can understand एक इकोनॉमिस्ट का व्यू बिल्कुल अलग होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन फार्मर्स की बात आ जाती है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द लोन्स विच हैव बीन टेकन बाय द फार्मर्स. अगर कोई इकोनॉमिस्ट या बैंकर आता है, तो व्हाट इज द व्यू ऑफ द बैंकर? We should be like very strict. If we are not strict with them, what will ultimately happen? It will create a habit kind of thing. If you give loan waiver, यही बोलते हैं वो. ठीक है. Because they are looking the reality from just their own perspective. क्योंकि उनको एक ही चीज समझ में आती है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस. बट कैन आई से कि लाइफ इज मच मोर देन प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द लाइफ. यस और नो? अब वहीं पर कोई सोशियोलॉजिस्ट होगा, ही वुड बी मोर प्रो फार्मर्स. वो कहेगा कि सारा माफ कर दो, खत्म करो. ठीक है. अगेन नॉट अ बैलेंस्ड व्यू. ही इज लुकिंग जस्ट फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव, ही इज नेग्लेक्टिंग द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. ठीक है. तो अगर ये सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से ही चलाने लगे, don't you think that there will be lots of conflicts, lots of problems? There will be no consensus essentially. So should there be someone who actually tries to look at the phenomena, integrate the phenomena, look from a perspective which balances everything, try to understand the reality as it is? And this task is done by who? It is done by geography. Can you see in this also, in this diagram also, it is visible? Is geography behaving as a bridge between physical and human? It is behaving as a bridge between physical and human phenomena. ठीक है. Physical is more objective, human is more subjective. So it is a bridge between that objective and subjective reality. ठीक है. It is trying to perceive the reality essentially as it is. So this is the basic idea of geography. Okay? And this is the reason why we need to study geography as a discipline. Okay? Now again the same question. अभी हमने देखा था spatial science. Why this aspect is important for us? What is the meaning of this? How it will be useful for me? This for me from civil services perspective. Yes, it is sum of all the sciences. Civil services perspective के लिए कैसे useful होगा? हाँ ठीक है. मतलब what you are saying is कि if you are studying geography, उसके ये advantages हैं. ठीक है. But I am not talking from that perspective. I am talking from the perspective of how I can incorporate this idea in my answers. Yes, very good. So tell me, if I'm writing a geographical answers, can it have multiple dimensions? Various types of dimensions. ठीक है. Now think, कई बार मैंने देखा है, in fact this mistake is also done by the books. And suppose the question is, or the topic is, geographical factors affecting some phenomena. What are the geographical factors which are affecting some phenomena? जैसे ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों केवल एक ही तरह के फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के फैक्टर्स. ठीक है. बुक्स में भी देखोगे तो ऐसे ही लिखा हुआ है. बट एक्चुअली कैन यू सेपरेट फिजिकल एंड ह्यूमन? ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी.
ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर मैं अपने आंसर्स लिख रहा हूं, and if suppose if I have to write about the geographical dimensions, can I say it should include multiple dimensions? As we have talked about, we have to think from those multiple dimensions, and that is how it will be very very useful. ठीक है, so that is another thing that we have to learn from geography. ठीक है, so जब मैं अभी बता रहा था कांत के बारे में, so Kant, he treated geography as a very unique kind of discipline. He also suggested that if geography doesn't develops some area where everything can converge, all these branches can converge, ठीक है, tell me, is it possible that with time these will specialize as more and more information comes? Can I say these branches would specialize? They'll do more and more specialization. तो अगर ये कन्वर्जेंस नहीं होगा, कैन वी से कि फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि ये अलग हो जाए, दे बिकम अ सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन्स? और अगर ऐसा हुआ तो कैन वी से विल वी लूज द एसेंस ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी तो इसीलिए था ना, टू इंटीग्रेट द फिनोमेना. ठीक है, सो ये दिस इंटीग्रेशन इज व्हाट इट इज द मोस्ट क्रूशियल, लाइक द स्पेस स्टडीज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी. और हम कोशिश करेंगे अपने आंसर्स में कि हम अपने आंसर्स को इंटीग्रेटिव मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश करें. दैट विल फेच मी द बेस्ट मार्क्स. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव टू लर्न. तो अब ये बात हो गई कि दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी. हमें ज्योग्राफी में दो चीजें करनी होती है, स्पेस में पढ़ना होता है चीजों को, और अल्टीमेटली हमें कैसे पढ़ना होता है, वी हैव टू स्टडी इन अ मोर इंटीग्रेटिव मैनर, मोर एक्सप्लेनेटरी मैनर. ठीक है, और इस सेंस में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी का जो एक्चुअली जो टर्म है, इट इज रॉन्ग, इट बिकम्स लिटिल बिट रॉन्ग. ठीक है, क्यों? बिकॉज ग्राफी इज डिस्क्रिप्शन. ग्राफी का मतलब क्या होता है? इट इज अ डिस्क्रिप्शन. बट ज्योग्राफी में वी आर नॉट जस्ट डूइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमेना, वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना. ठीक है, सो एक्चुअली इट शुड हैव बीन लॉजी रादर देन ग्राफी, बट लॉजी कोई पहले ही ले चुका था, सो वी कुडंट टेक दैट. ठीक है, so because of that we had to be content with graphy, so that is why it is geography. Now अब देखते हैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंटली, किसी भी फिनोमेना को देखने के कई तरीके होते हैं. ठीक है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज ऑफ लुकिंग एट एनी फिनोमेना. ठीक है, सो वन इज the objective way of looking at the phenomena. ठीक है, objective way of looking at the phenomena. So suppose in this objective way, this is suppose the phenomena, the object. So here what we are saying, this object is being seen by this human being. ठीक है, so this is basically what, this is the objective reality. अब इसमें basic assumption क्या है? इसमें basic assumption, can I say the basic assumption is that this objective reality does exist? Yes or no? ये मान रहे हैं हम objective reality है. So this is the objective way of looking at the phenomena. But there is a subjective way of looking at the phenomena. ठीक है, so this same phenomena which we are talking about here, and can we say कि ये एरो ऐसे भी हो सकता है? वहां पे एरो क्या था? ऑब्जेक्टिव रियलिटी वाज गिविंग द इंफॉर्मेशन, बट ये एरो ऐसा भी हो सकता है. there are many interpretation of the reality. For example, this glass, this is the objective reality. ठीक है,
but interpretations of these glass would be what? They would be different by different people. होगा ना? So here, can I say this objective reality is also intervened by the mind? And then we are seeing the reality for us is not the objective reality. बीच में एक फिल्टर ऑफ माइंड है, और जो हमें दिख रहा है वो ये बिल्कुल प्योर वाली ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो है नहीं. ठीक है, व्हाट वी आर सीइंग इज बीइंग फिल्टर्ड बाय द माइंड. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज अगर अभी हम क्लास में एक एक्टिविटी करें, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई आस्क यू पीपल टू मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ मी. सब लोग अलग अलग पोर्ट्रेट बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट होगा. ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो सेम है, but everyone's portrait would become different. How? Because everyone's ability to see the details is different. Do you get my point? So जो reality हम देख रहे हैं, that reality is not the ultimate objective reality. ठीक है, that reality is something which is filtered by the mind. Some can even go and say that actually what we are seeing is nothing but the projection of the mind. ठीक है, for example, we all have dreams. ठीक है, सोते हैं तो ड्रीम्स आते हैं, and in those periods of dreams, tell me, don't you think कि सब कुछ रियल लगता है? Everything looks very real, in real, like it is happening. But सुबह पता चलता है कि वो it was just an illusion. ठीक है, so there can be even a view where we can say that it may be a projection of mind. Many people would claim that they have seen ghosts. सुना होगा, if you go into the villages, जो पुराने लोग होते हैं सबने देखा है ghosts. But whatever, it may be said that it is just what it is extension of the mind. ये भी कह सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि वर्ल्ड को देखने के, नॉलेज को गेन करने के दो तरीके हो सकते हैं. ठीक है, वन कैन बी द ऑब्जेक्टिव वे, एंड दिस ऑब्जेक्टिव वे इज व्हाट वी कॉल इट एज द साइंटिफिक वे of knowing the world. ठीक है, दिस इज अ साइंटिफिक वे. हमें जो दिख रहा है बस उसी को रियलिटी मान रहे हैं. व्हाट वी कैन नॉट सी, इट इज नॉट रियल. इमोशंस एटसेट्रा, अदर पीपल्स वैल्यू सिस्टम्स, दे आर अनरियल फॉर अ साइंटिस्ट. सो दैट इज बेसिकली व्हाट अ साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट द फिनोमेना. बट अगर मैं यहां पर देखूं तो देयर कैन बी different people and they all can have different outlook to the same phenomena. ठीक है, so यहां पर क्या हो रहा है, there is the reality is becoming more subjective. Here we are focusing more on what? Are we focusing more on the uniqueness of the phenomena? ठीक है, so this way of looking at the phenomena is what we are calling it as the philosophical वे. ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? सो यहां पर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन साइंटिफिक वे, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी से क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड सम कॉमन थिंग्स. ठीक है, बहुत सारी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसमें हमें क्या मिलेगा, बहुत कॉमन चीजें मिलेंगी. तो इस साइंटिफिक वे में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड कॉमन पैटर्न्स. ठीक है, टू फाइंड द कॉमन पैटर्न्स. यहां पर देयर इज फिजिकल फिनोमेना विच इज अफेक्टिंग द ह्यूमंस. यस और नो? कह सकते हैं देयर इज अ फिजिकल फिनोमेना विच इज अफेक्टिंग द ह्यूमंस. टेल मी,
डू वी फाइंड कि फिजिकल फिनोमेना में सेम फिनोमेना बार बार रिपीट होता है? इज इट पॉसिबल कि सेम फिनोमेना बार बार रिपीट होगा? इफ वाटर रिवर इज फ्लोइंग, will the river always flow from high to low area? Yes or no? Rivers meander. So can we say we find majority of the rivers meander? So is the same phenomena repeated again and again? हो रहा है ना? तो अगर if this is ultimately telling us controlling our activities, tell me, does this mean कि यहां पर कॉमन पैटर्न्स मिलेंगे हमें? ह्यूमन एक्टिविटीज में भी मिल जाएंगे कॉमन पैटर्न्स, और फोकस हमारा क्या रहेगा? उसी कॉमन पैटर्न्स को ढूंढना. इनफैक्ट फिजिकल वर्ल्ड में आर देयर नेचुरल लॉज? यस और नो? देयर आर सम नेचुरल लॉज. तो कैन आई से यही नेचुरल लॉज ह्यूमन एक्टिविटीज को भी डिटरमाइन करेंगे? ठीक है. सो इन दिस वे ऑफ लुकिंग हमारा बेसिक आइडिया क्या होगा? To find those common patterns, and on the basis of those common patterns, what we have to do? We have to establish theories and laws. यही करना होगा. ठीक है. To develop theories and laws. ठीक है. So science क्या करता है? This is the same thing which is being done by science. Science ने एक theory develop कर ली, gravity. Gravity attracts mass towards itself. अब इस थ्योरी से हम बहुत सारी चीजें समझा सकते हैं. लाइक कैन वी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स? एज प्लेट्स आर सबडक्टिंग, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर सबडक्टिंग, व्हाट इज हैपनिंग? ग्रेविटी इज पुलिंग देम टुवर्ड्स द सेंटर. दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द सबडक्शन ऑफ द प्लेट्स. ठीक है. सो एक लॉ डेवलप हुआ, उससे हम और फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दिस इज द अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच, the objective approach or the scientific approach. Do you get my point? तो ये एक तरीका है. यहां पर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एस्टैब्लिशिंग कॉज इफेक्ट. दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट द फिनोमेना. बाकी हर चीज विच वी कैनॉट सी इज अनरियल फॉर अ साइंटिस्ट. ठीक है. सो दिस इज द साइंटिफिक वे, एंड दिस साइंटिफिक वे वी विल सी इट इज रेफर्ड टू एज द systematic approach. It is referred to as the systematic approach. समझ में आ गई बात? तो इन द सिस्टमैटिक अप्रोच हम क्या करते हैं? हमारा फोकस किस पे होगा? इन फाइंडिंग कॉमन पैटर्न्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कॉमन पैटर्न्स मेकिंग थ्योरीज एंड लॉज. ठीक है. बट यहां पर इस वे ऑफ लुकिंग में कैन वी सी कि जितने तरह के लोग होंगे उतने तरह के फिनोमेना. देयर इज यूनिकनेस. सो दिस वे ऑफ स्टडी it would focus upon what? The unique or the uniqueness of the phenomena. That would be the focal point. ठीक है. Now, if this uniqueness is the focal point, इसको मैं एक एग्जांपल से इनफैक्ट समझाता हूं, तुम लोगों को शायद समझ में आएगा बेटर. All of you know about tropical rainforest. पढ़ा है सबने? ठीक है. जीएस में सबने पढ़ा होगा. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देर इज द बिगेस्ट canopy. At least there are 3 canopy of trees which are found in the tropical rainforest. So there is layer A, which is the tallest one. उसके नीचे you find the second canopy, the layer B, and below that you will even find that there is a third canopy which would be found. ठीक है.
अब ये जो होते हैं ट्रीज, दे विल ऑलवेज बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर. द इमर्जेंट लेयर जो होता है, these large trees would be always located far away from each other. Why? Because to become large, they would require large resources. So they require large amount of resources, and thus they should not compete with each other. If they begin to compete with each other, तो दोनों ही इतने बड़े नहीं हो पाएंगे. इसलिए उनको क्या करना है? They will be away from each other. ठीक है. तो अब देखो, what I am saying, these are some general rules. Tree canopy, these emergent layer characteristics, और भी चीजें बता सकता हूं. Like for example, these trees, they would have small leaves and light green leaves. Because are they very above? They are getting ample amount of sunlight. They don't need to develop dark green leaves. Why small? Because as we go above, what happens with the friction? It reduces. So what will happen with wind velocity? Wind velocity बढ़ जाएगा. ठीक है. तो अगर wind velocity बढ़ रहा है, तो what will happen with the rates of evapotranspiration? They would also increase. Transpiration भी बढ़ जाएगा. So does these trees need to save water? So their leaves should be what? They should be small. सीधी सी बात है. So many rules we can find. अब ये जो rules हैं, can I say कि ये जो चीजें मैंने बताई, will I also find this all these things in Amazon forest? मिलेगा. But ये जो rules हैं, will they also be found to be applicable in Africa, Congo forest, Guinea coast, Indonesian forest में भी यही सेम रूल मिल जाएगा. ठीक है. तो ये तीन अलग अलग फिनोमेनास थे, उसमें से हमने क्या किया? कॉमन पैटर्न्स ढूंढे और उन कॉमन पैटर्न्स को लॉज में कन्वर्ट कर दिया, थ्योरीज में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस अप्रोच इज व्हाट? दिस इज द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ स्टडी. ठीक है. और जब हम बायोम्स पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे, बायोम्स इज एसेंशियली व्हाट? इट इज सिस्टमैटिक वे ऑफ लुकिंग एट द फिनोमेना. ठीक है. बट एक और रियलिटी भी है. व्हाट इज दैट रियलिटी? It was found in when 17th century they started, after the Renaissance period, age of discovery, etc. When they actually started to study these forests, scientists were stunned. And why they were stunned? Between the Congo forest and the Amazon forest, they couldn't find a single mammal species which was common. Not even a single mammal species which was common between the Amazon forest and the Congo forest. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? कैन वी से कि इसका मतलब है कि यूनिक भी एग्जिस्ट करता है. नो डाउट देयर आर सम पैटर्न्स, देयर आर सम सिमिलैरिटीज, बट along with those similarities there are also what? Differences, those uniquenesses. ठीक है. So should there be an approach also to study those unique features? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है. So in geography there is an approach and we call it as the regional approach. ठीक है. So there will always be two ways of looking at the phenomena. And because of this two ways of looking at the phenomena, we'll have two type of approaches of studying the phenomena, geographical phenomena. One is the systematic approach and the other one is the regional approach. ये बात समझ में आ गई? Now, देखेंगे बाद में when we'll study perspectives in human geography, that many people will focus more on the dichotomy of these two, systematic or regional. dichotomous हैं, दोनों अलग हैं. Some would say that we should follow just what? Systematic approach, while some would say no, we should just follow the regional approach. But we will see very serious scholars and one of very famous, very tall figures of geography
whether it is Ritter, whether it is, if you talk about Hettner, whether it is Hartshorne, and several others. What was their view? Their view was that both of these approaches are actually what? Complementary to each other. Okay? They are complementary to each other. How they are complementary? Tell me. Suppose if we are making some laws, theories in the systematic branch of study, should those theories or laws or hypotheses, should it be tested in the region, in the real world? Yes or no? उसको टेस्ट करेंगे. लाइक कल मैंने बताया था, तुमको याद है, वी टॉक्ड अबाउट दैट वॉन थ्यूनेन मॉडल. वॉन थ्यूनेन ने बोला कि as you go away from the market, what will happen with agricultural intensity? It declines. Did we test it yesterday in Punjab and Bihar? टेस्ट किया था हमने. ठीक है. So if we are testing these laws and theories in the regional world or in the regions, will they get more validity? Yes or no? अगर उसमें गलतियां हैं तो can we actually make the laws and theories even better? Tell me. Yes or no? We can do that. So it will lead to improvement of the systematic geography. On the other hand, अगर हम systematic laws को regions में apply करते हैं, तो can I say, can we get out of that torture which we have experienced? All of you, I have also experienced that torture in our school days. जब ज्योग्राफी का टीचर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाता था, तो what it was, I really call it as a torture, because there was no logical reasoning. It was just facts, facts, facts. ठीक है. ज्योग्राफी एनसाइक्लोपीडिया बन गया था. So can we actually use these laws, जैसे हमने वहां पर किया एग्रीकल्चर पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए, can we use these laws to explain the regional unique phenomena? Yes or no? कर सकते हैं. ठीक है. So will it make geography, this regional geography, look more scientific? ठीक है. It will make the regional geography look more scientific. So actually we will see that many scholars have done what? They focused on the dichotomous nature of these. But in reality, both are complementary to each other, the systematic approach and the regional approach. I hope you get my point. So अगर मैं अब syllabus को देखूं, तो now I think the syllabus would make a better sense for you. That there is paper 1 and there is paper 2. ठीक है. So paper 1 is which we are studying geography from which approach? The systematic approach. ठीक है. Here we are using the systematic approach. ठीक है. So ये जो basic conception है कि paper 1 is about more about world geography, गलत conception है. It is not world geography, it is systematic approach. Studying geography from a systematic approach. It is study of the geographical theories. ठीक है. And obviously paper 2 is what? It is study of geography through regional approach. And here one region has been given for us to study. Obviously it is the Indian region. So it is essentially your geography of India. ठीक है. So यही चीज हमें करनी है. अब इससे एक बात बहुत क्लियर हो जाती है. When I am using this systematic approach or writing paper 1, can I say जो भी मैं लॉज बना रहा हूं, थ्योरीज बना रहा हूं, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा? यस और नो? और वैलिडेट करने के लिए मुझे रीजन से एग्जांपल लेने पड़ेंगे.
इट इज अप टू मी, आई कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम वर्ल्ड रीजन्स और इंडियन रीजन, कोई भी ले लूं चलेगा, ठीक है. एंड व्हेन आई एम राइटिंग पेपर 2, should I try to make it scientific? That should be my objective. And how I can make it scientific? By borrowing the concepts from the paper 1, that is the systematic approach. This is what I have to do. And this is how geography should be prepared and written. In fact, बाद में देखेंगे paper 2. There are two ideas of regional geography, chorography and chorology. ठीक है, कोरो का मतलब होता है रीजन, स्पेस. ग्राफी वी ऑलरेडी नो, लॉजी वी ऑलरेडी नो, ठीक है. सो जो रीजनल जोग्राफर्स होते थे, दे ऑलवेज वांटेड टू डेवलप कोरोलॉजी, ठीक है. बट कोरोलॉजी से पहले का स्टेप क्या है? कोरोग्राफी. पहले आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल इंटर रिलेट दैट इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटिव साइंस बनाएंगे उसको. एट द सेकेंड लेवल इट वुड बिकम कोरोलॉजी. बट देखेंगे दिस वाज वन प्रॉब्लम विद ज्योग्राफी, दैट स्कॉलर्स ने क्या किया, स्कॉलर्स दे एडॉप्टेड द कोरोग्राफी. उन्होंने कोरोग्राफी अपने एकेडमिक कैरियर में स्टार्ट किया. एंड ज्योग्राफी में इतने डायमेंशंस हैं दैट दे कंटिन्यूड कोरोग्राफी. और कोरोलॉजी पहुंचते पहले ही क्या हो गए, रिटायर हो गए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए. तो एक्चुअली कोरोलॉजी डेवलप ही नहीं हो पाए, इट कुडंट डेवलप इन ज्योग्राफी, ठीक है. एंड विल सी देयर वर लॉट्स ऑफ troubling times for geography after Second World War because of this reason. So many things we'll later talk about. But this is reality, और वो reality आज भी है. Can you tell me a single book of Indian geography which actually explains the phenomena through use of concepts of geography? पढ़ा है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे एनी बुक यू टेक, खुल्लर ले लो. डोंट यू थिंक दैट दे आर मोर लाइक एनसाइक्लोपीडियाज? इंफॉर्मेशन ले लो, ये इंफॉर्मेशन, यहां पर इतना पॉपुलेशन है, इंडिया का ग्रोथ, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया फेज 1, फेज 2, फेज 3. दे विल नॉट यूज की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यूज कर लो भाई, उससे बता दो, समझ में आ जाएगा जिस पढ़ने वाले को भी, ठीक है. सो इट इज बेसिकली व्हाट दे आर जस्ट राइटिंग कोरियोग्राफी. चैलेंज फॉर अस, ठीक है, इन यूपीएससी ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स के लिए, मे बी वी विल चेंज द एकेडमिक्स ऑफ ज्योग्राफी. वी कैन डू दैट कोरोलॉजी थिंग हियर इन आवर आंसर्स. वी कैन शो दोज एग्जामिनर्स हु आर चेकिंग आवर कॉपीज कि देखो भाई कोरोलॉजी ऐसे की जाती है, ठीक है. एंड वी विल डू दैट. और यही अप्रोच हमें फॉलो करनी है. एंड दिस इज द वे थ्रू विच वी विल बी एबल टू मेक आवर कंटेंट स्मॉलर टू स्टडी एंड बेटर वी विल बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है. सो विल स्टॉप फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो. Now we'll go tomorrow into more details of what is physical geography, what is human geography, and further about Indian geography. Okay, I hope you enjoyed the lecture today. It was a bit more on the subject matter. So my experience tells me कि जब मैं अपने lectures को YouTube पे open करता हूँ, when I am taking the strategy lecture, motivation वाला lecture, तो उसमें views भर के आते हैं, ठीक है. As soon as I shift to the content part, the views reduce, ठीक है. इससे मैंने एक चीज निकाली है, very important. I have understood that majority of people who are preparing for the UPSC, they are daydreamers. पहले एक सीरियल आया करता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है. तो सब मुंगेरी लाल हैं, दे आर ऑल डे ड्रीमर्स, ठीक है. फालतू की बातें कर सोचने को बोल दो कि मैं
आईएएस बन के ये चेंज कर दूंगा, वो चेंज कर दूंगा, उसमें बड़ा मजा आता है सबको। ऐसे पढ़ाई कर लूंगा, ठीक है, बहुत मजा आता है, लेकिन एक्चुअली में पढ़ना कोई नहीं चाहता। सो यू डोंट हैव टू बी अ डे ड्रीमर, यू हैव टू बी एन इम्प्लीमेंटर, ठीक है। और जो इम्प्लीमेंटर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस मेरे पास जब वो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होते हैं। they are actually related with many the problems which you face, related with subject matter, related with answer writing. But there is second category, जो first category इनफैक्ट मैंने बताया डे ड्रीमर्स, मेजॉरिटी कैटेगरी, उनके क्वेश्चन अलग होते हैं। उनके क्वेश्चंस होते हैं तैयारी कैसे करें, फोर्थ अटेम्प्ट में भी फिफ्थ अटेम्प्ट में भी they'll come with the same question, तैयारी कैसे करें, ठीक है। so you have to decide you are on which side. Are you a daydreamer, or you are actually an implementer, or you at least want to become an implementer, ठीक है। ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटर बनने में ही फायदा है इफ वी आर हियर। और इम्प्लीमेंटर की खास बात क्या होती है, उसको फालतू की चीज़ों से मतलब नहीं होता, ही जस्ट मोर कंसर्न अबाउट स्टडिंग। जो चीज़ उसके पास है पहले उसको करके देखता है, देन ही वरीज अबाउट एवरीथिंग एल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, दे आस्क मी कि सर आप तो सारी क्लास में इतने सारे लोगों को, हजारों बच्चों को पढ़ाते हो, तो वो सब आपसे पढ़ते हैं, तो दे विल बी राइटिंग द सेम आंसर, फिर मुझे ज़्यादा नंबर कैसे मिलेंगे, हाउ टू मेक माई आंसर्स डिफरेंट, ठीक है। एंड एज सुन एज अ पर्सन आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई नो द कैटेगरी टू विच ही बिलोंग्स, ठीक है। ही और शी बिलोंग्स टू द डे ड्रीमर कैटेगरी। इसका सीधा मतलब है इसने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अगर ये कोशिश करता पढ़ने की तो इसको पता चलता कि ये सब प्लान्स यहां पर लिख देना, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। वो लिख दिया मैंने कि 60-40, करके तो दिखाओ, पता चलेगा हाउ मच डिफिकल्ट इट इज। Not even 1% people can actually follow, have that kind of willpower to follow that. तो वो बात आती ही नहीं है, because there will be very few people, अगर मैंने 10 पॉइंट लिखाए हैं, there will be very few people who will be actually able to recall in the examination all those 10 points. तो वो यूनिकनेस की बात ही नहीं आती है। People are not even doing the basics, aren't able to write even the basics. If you check the copies जो हमारे पास टेस्ट सीरीज में आती है, you'll laugh, you'll literally laugh. मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आई लाफ और क्राई दोनों एक साथ होता है, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क आई हैव पुट, ठीक है। सो विल स्टॉप, गुड बाय, टेक केयर।